खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. Very good afternoon to you all. This is Dr. Anam Zahir from Homeopathy Heals signing in for another beautiful Sunday, episode 47 of Instagram Live Guest Talk with Homeopathy Heals. First of all, thank you so much for the love you have all given YouTube के videos के लिए, Instagram के live के लिए, and अकेली चली थी मैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, and we have come up to episode 47. Our today's guest is very jovial, very energetic, very ambitious, and आज जो हमारे guest हैं, हमारे साथ हैं, he's very dynamic, young homeopath, and what I like about him is, he has vigorous knowledge of practice of medicine. Let's add him. Boss will be here any minute. So I hope आज का जो टॉपिक है हमारा डीलिंग ICU एंड इमरजेंसीज विद होम्योपैथी, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए होंगे बॉस से पूछने के लिए. हेलो डॉक्टर हिना. एक बात मैं और बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट टीचर या सीनियर आकर यहाँ इंटरव्यू दे, कोई टॉपिक डिस्कस करे गेस्ट टॉक पर, तो मुझे अपने टीचर का या आप जिनको सुनना चाहते हैं उनका ईमेल एड्रेस इनबॉक्स करना ना भूलें ताकि हम उन्हें इनविटेशन भेज सकें. हेलो डॉक्टर नवीन. बॉस प्लीज जॉइन अस. आई सेंड यू द रिक्वेस्ट. Very good afternoon, Dr. Sonali. Very good afternoon, Dr. Kajal. Hello, Dr. Nidhi. I'm so glad आप सब लोग यहाँ हैं. We as a Homeopathy Heals team feel so much accomplished when I see a lot of love and support from you all. Boss, please accept the request, or you send me requests to join the live. Very good afternoon. Very good afternoon. Hello. Good afternoon, boss. Good afternoon. Actually, I'm trying to join you from my laptop, but I would to join from that side. So it's okay? That's okay. So before we start, I would like to introduce you. He is very young and very dynamic. He's Dr. Pravin Pente. And अगर बॉस ने कहाँ से फेलोशिप कोर्सेज किए, कहाँ किन किन स्टाइल से सीखा है, उसके लिए एक आधा सेशन और चाहिए. But still I have to sum up that he is BHMS and he has also pursued CCAH and FCAH, fellowship course in advanced homeopathy and certified course in advanced homeopathy.
He has also learned from stalwarts like directly from Dr. Rajan Sankaran sir, Dr. Narendra Mehta at Predictive Homeopathy. He has served as RMO at Mahalakshmi Hospital and he has a clinical experience of more than 15 years. 15 years, boss, आपकी उम्र क्या होगी फिर? Hello? Boss, you have Yeah. a clinical experience of 15 years. आपकी age क्या होगी? एज नहीं बताया करते. That is He the has secret of my, one. you know, that is the secret of my, you can say, fitness, you He can has say. won so many Uh, awards at case presentation मैं competition and he's been eminent speaker मैं in many seminars. And I would like to tell audience about you that he likes new challenges in life and he's very much capable of living life in every kind of condition. Again, warm welcome to you, boss. yes, thank you so much uh, for your introduction and you know लंबा जो आपने मुझे मेरे बारे में बताया कि मेरे किरदार के बारे में बताया मेरे बारे में उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. और रही बात उम्र की तो उम्र कुछ मायने नहीं रखती जिंदगी में. तजुर्बा होना बहुत जरूरी है. तो आई बिलीव इन ऑन दैट ना कि जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे फॉलोअर्स दे हैव एक्सपीरियंस इन देयर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड इट्स ओके. मैं बस यही कहना चाहता हूँ आज का सेशन शुरू करने से पहले जितने भी मेरे दोस्त है जितने भी मेरे नौजवान होम्योपैथ यंगेस्ट है उनसे एक ही बात करना चाहता हूँ मैं दोस्तों कि क्या होता है ना एक बहुत अच्छी कहावत है मैं बोल देता हूँ आपको. वक्त वक्त के गर्दिशों में कभी गम ना करो मेरे दोस्त. वक्त के गर्दिशों में कभी गम ना करे मेरे दोस्त. हौसले जो होते हैं ना हौसले जो होते हैं ना वो मुश्किलों में ही पलते हैं. तो बस उसी वाह, मुश्किलों से मैं गुजरते आ रहा हूँ. जहां पहुंचा हूँ बस अ, चलते जा रहा हूँ. बहुत बहुत खूब. आज का सेशन कहना बहुत मैजिकल होने वाला है. I'm so sure. मैंने भी गन लोडेड कर रखी है. Don't worry. There's some network issue at your side, I guess. I'll add him again. Boss, please accept the request. Thank you, Dr. Harsha. Beauty lies in the eyes of beholder. My feelings are mutual. And I think every female, every estrogen component is beautiful one way or the other. Boss, I've sent you the request. Please accept it. Yes, Mr. Upendra, even I am so, restless, very eager to start the session. But this Instagram has something always unexpected.
Yeah, Okay. Yeah, boss. I'm Welcome again. audible because of some Yeah, yeah, disturbance. yeah. I think it's a network issue. So not able No to join. problem, no मैं बोला problem, ना no मुश्किलों problem. में ही पलता Without हूँ मैं. मुश्किलों में ही पलता हूँ, बोल तो रहा हूँ आपको. मुश्किल है कि मेरी सीढ़ियां हैं ऊपर आने की, आप तक आने की, है ना. हर आप पर फेंका हुआ हर पत्थर हाँ से सीढ़ी की चुनाई होनी चाहिए, जो हर सीढ़ी आपको सक्सेस की तरफ हाँ, लेके जाए, हर फेंका हुआ वही पत्थर। वही वही बना रहा हूँ मैं अभी बस. क्या करें, मुश्किलें खत्म ही नहीं होती है. चलो कोई कोई बात नहीं, हम शुरू करते बिना हैं. टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, क्योंकि श्योर. ऑडियंस भी मेरी तरफ बहुत ज्यादा बेचैन यस. हो रही है। बॉस, हाँ मेरा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आप? दोनों दोनों दोनों, नो एनी ओके। प्रॉब्लम. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस. इज कि या. आज का जो हमारा टॉपिक है, डीलिंग आईसीयू की इमरजेंसीज विद होम्योपैथी, और आपका 15 साल का क्लिनिक का एक्सपीरियंस भी है, आप आरएमओ भी रहे, तो हमें अपनी उस आईसीयू की जर्नी के बारे में बताइए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्जन को असिस्ट करने का और एक होम्योपैथ तक की जो जर्नी है उसके बारे में बताइए। अभी. यस, जस्ट वांटेड टू टेल you about myself. My journey started from my second year basically. So, but it was a hard time for me, and not only for me, it was a hard time for many, kind of doctors who had been from a very, poor background, or we can say a common man's background. तो एक्चुअली मैं तो बोल देता हूँ कि मैं डॉक्टर तो अनफॉर्चुनेटली बना हूँ, बनना ही नहीं था मुझे डॉक्टर. मेरे जनरेशन में कोई डॉक्टर नहीं है. आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, इवन आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन. तो मैं था कि मैं जाता था खेलने के लिए बास्केटबॉल मैचेस, एंड माय फादर यूज्ड टू गो इन मुंबई फॉर पीएमटी का जो था राउंड, उसके लिए जाते थे. एंड ही टोल्ड मी नाउ यू गॉट एडमिशन इन बीएचएमएस एंड यू हैव टू गो फॉर दैट. एंड आई आस्क्ड हिम, बीएचएमएस ये क्या होता है? तो he told me बीएचएमएस वो साबूदाने की गोलियां. मेरे को नहीं करना है साबूदाने की गोलियां. आई डोंट वांट टू गो इनटू दिट. मेरे दोस्त चिढ़ाएंगे मुझे साबूदाने की गोली करके. And then actually it happens after going to Beaton's college. My all classmates from 12th, they was in some engineering, कोई किधर था, and they was like teasing me कि तू साबूदाने की गोलियां बेचेगा. मतलब यस बेटा, मैं अभी साबूदाने की गोलियां बेचेगा. And that was the first moment I took it as my, as my revenge. And that was the on that moment I turned my revenge to success. And today it happens. Those people, those my friends who was like, teasing me on that time, now they have a kids because of me, because of my homeopathy, you know. So now they are, अभी आओ तो हाथ जोड़ते हैं, यार थैंक यू सो मच यार, तेरे कारण हमको आज भी अच्छा हुआ, kind of, So that was the story. So it started, my ICU journey started from my second year. Basically in Diwali's, or in summer vacations, I was doing a job in as a RMO in second year. So I never joined any GP. I never joined any MD medicine. I directly landed up into the ICUs, and from there I started learning how to go for tracheostomy, how to go for taking sample for ABG, how to go for intracardiac injections, how to go adrenaline, and all that. So actually, I was not aware of what is the meaning of to taking ABG samples, where we need to go, intracardiac injections. What is the basic cost? Why I need to go for doing tracheostomy? How to do suctions? How to insert the Riles tube and all that. So that was my experience just for doing the work. मुझे पैसे चाहिए थे, एंड मुझे कुछ करना था, तो मैं बस आर्मीशिप कर रहा था मैं एक्चुअली. बट दैट वाज द वेरी फैसिनेटिंग मोमेंट फॉर मी कि यार ये भी जिंदगी ना बड़ी अच्छी होती है, चलो ये भी करके देखते हैं. So that was the moment I was assisting one of the best, surgeon of Akola, Dr. Gadpal, Dr. Bhopale, and they was like, कि अरे यार तू ना बड़ा डेडिकेटेड बंदा है. And I was doing job in ICU for 12 hours. कभी कभी तो I did highest 72 hours का जॉब किया मैंने आईसीयू में. जब दिवाली में छुट्टी रहती है तो बाकी कलीग चले जाते थे, एंड आई वाज देयर कंप्लीटली नाइस. तो खाना पीना सब वहीं रहता था हमारा. एंड 20 बेड का आईसीयू था. तो ऐसा होता था कि इमरजेंसी कब क्या होगा पता नहीं था. बस हमें ये पता कि इंट्राकार्डिक इंजेक्शन कहाँ देना है, बस घुसाड़ो. ऐसा था एक्चुअली, टू बी फ्रैंकली. एंड हाँ, आईसीयू में ऐसे ही होता है कि देयर आर वन कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, यू आर द आरएमओस, एंड यू हैव टू डू योर जॉब एट दैट सेट. And from that moment, I learned when to give adrenaline, when to give atropine. This journey was going on till my final year. So whenever in third year, then I visited to Pune. Then after final year, I landed in Mumbai, and then I got a chance to work in Mahalakshmi Hospital at Arnala. It's a sea coastal area in Arnala, kind of a Virar के पास में है.
and there was a hospital of almost 5-bedded ICU, 50-60 बेड का हॉस्पिटल था, and you are the boss there. As you said, boss बोलते हो. So that time you are the boss there, and you have all the authority. You can do anything. Whatever you learn from your second year in ICUs, you have to rights to do anything with the patient, because from there 30 kilometers away from my hospital there was one hospital called Sanjeevani Hospital. एंड ये आपके एक काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उस बंदे को बचाना है. आप कुछ भी करो, देयर कैन बी स्नेक बाइट, देयर कैन बी ड्राउनिंग, देयर कैन बी पॉइजनिंग, देयर कैन बी डिलीवरीज, एमआई, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज आते थे हमको. एंड मी एंड माय फ्रेंड डॉक्टर राव वाज देयर. हम दोनों ही मैनेज करते थे. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई टचवुड आई गॉट द the mentor like Dr. JD Samant. He's one of the he was one of the best allopath we can say in the Mumbai. And उनके सीख के गया. मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ फॉर माय ऑल कलीग्स एंड ऑल माय फॉर ऑल होम्योपैथ. वो मुझे हमेशा बोलते थे कि दोस्त कि तूने होम्योपैथी की है ना, बट तुझे कुछ ने एमबीबीएस के बुक्स पढ़ने के लिए किसी ने मना ही नहीं किया. तुझे किसी ने एमडी मेडिसिन के no? And from that moment, I just got that idea. Oh my God, I was limited myself कि यार मैं तो होम्योपैथ हूँ, तो मैं इनके बुक्स क्यों पढूं. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब जो मैं लर्निंग्स देना चाहता हूँ कि आप ये दिमाग से निकाल लो. ऐसा नहीं होता कि आईसीयू सिर्फ वही लोग हैंडल करते हैं. यू ऑल्सो हैव अथॉरिटी, गो एंड रीड द बुक्स. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई वेंट टू टू द केम हॉस्पिटल. केम हॉस्पिटल के बाजू में ना एक बहुत बड़ा बुक्स का स्टॉल होता है. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई परचेज द अमेरिकन बुक ऑफ मेडिसिन. From that moment, I purchased many books which is related to the MBBS colleagues and उनके लिए जो रहता है. From I started learning why to go atropine, when to go adrenaline, why to give soda carb, and that was the journey of my ICU. And basically, I was very much fascinating towards the surgeries, तो वो बड़ा मजा आता था करने में मुझको कि ट्रेकिस्टोमी असिस्ट करो. एंड इट वाज इमरजेंसी. समटाइम्स ऐसा होता था कि पेशेंट कम्स विद द हेड इंजुरी एंड आप उसको प्रोसीजर में लगे रहो एंड ही वाज वोमिटिंग ऑफ ब्लड की वोमिटिंग आपके ऊपर कर रहा है. ही वाज ट्राइंग टू स्टॉप हिम, कुछ भी करके उसको बचाना है. सो ये बहुत जरूरी है, कुछ भी करके बचाना. ये जो जुनून है ना, ये अगर आप रखोगे तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नो मैटर विच मेडिसिन यू आर अप्लाई. इट्स होम्योपैथी और एलोपैथी, नो मैटर दैट टाइम. बट नाउ आई एम कंप्लीटली इनटू द होम्योपैथी. सो तो अभी तो मेरे लिए ये बन गया है journey. This is the basically history of my ICU learning. So we can say procedures I learned from my second year and why this procedure happens, why we need to this. Then फिर मैं धीरे 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 पढ़ते गया और फिर मुझे समझ में आता गया कि यार ये क्यों करते थे हम लोग. And now that knowledge I'm applying into my homeopathy. Right? That's so good. Yeah. तो मैं आपको वही बोला ना कि मुश्किलें में ही पलते हैं. तो वो मुश्किलें थी जिसके लिए हम जाते थे. And now today we are here. रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में. ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा सारे. रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाए. तो मेरा अगला सवाल ये है कि यू हैव प्रैक्टिस्ड एट विलेज लेवल. तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या डिफिकल्टीज है जो होम्योपैथ को आती है जब हम विलेज लेवल, रूरल लेवल और ऐसे लोग जिनका आईक्यू, इंटेलेक्ट कम होता है, ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करते हैं. बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने मुझको. तो so what is happening now? Actually, I started my practice in Karanja. तो जर्नी थोड़ा ऐसा था, मैं बता देता हूँ कि I started my practice in Pune. That time my brother was there, he was doing job and I started my clinic in Kothur. But because of some reason he shifted to Africa and I was completely dependent on him. So I decided why not to go to my place where I belong. तो मैं फिर करंजा करके आया हूँ. एक तालुका लेवल का तालुका है हमारा, बहुत छोटा सा गांव है जहाँ आईसीयू भी नहीं है, आज भी आईसीयू नहीं है, एक्सरे मशीन भी नहीं थी और सीटी स्कैन आज भी नहीं है. तो मैं वहां पे आई स्टार्टेड प्रैक्टिस देयर एंड देयर वाज नो एनी होम्योपैथ हु वाज लाइक आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन. राइट. तो एक्चुअली क्या होता था कि मैं जब अर्नाला पढ़ रहा था तो मुझे मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर, डॉक्टर ऋषि वैस. मोस्ट ऑफ द पीपल नोज हिम, ही इज माय क्लासमेट एंड बेसिकली ही इज माय मेन मेंटर टू टर्न अप फ्रॉम एलोपैथी,
फ्रॉम सर्जरीज टू द होम्योपैथी। सो मैं अर्नाला से अप डाउन करता था सांताक्रूज डॉक्टर नरेंद्र मेहता सर के यहाँ पे पढ़ने के लिए। And basically, my main guru, Dr. Narendra Mehta, he was working almost in all pathological cases, brain tumor cases, comatose cases. So I learned up most of the things from him. So he was also a allopath. And you know what happened? जब मैं मेरे गांव आया जहाँ पे, तो पीपल वाज लाइक आस्किंग कि ये डॉक्टर ना बड़ा बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, इसके जहाँ के मतलब नहीं है यू नो। तो मैं बताना नहीं चाहिए, बट जस्ट टेलिंग यू कि नो विलेज लेवल पीपल क्या है ना, दे जस्ट वांट टू फिनिश योर हिस्ट्री इन 2 मिनट्स। जस्ट दे दो यार, जाने दो, हमको काम पे जाना है, हमको खेत में जाना है, हमको मजूरी पे जाना है, हमको नो काइंड ऑफ ऐसा। एंड ही इज डॉक्टर लाइक आस्किंग खाना खाया क्या, पोटी कैसा हुआ, काइंड ऑफ यू नो। So there are so many difficulties where you cannot ask them a long history, and you know history is important in our homeopathy. So I was trying to understand them just in a short history because they are coming to me with their basic complaints like आज पैर में छुरी लग गई, आज पैर में कुराड लग गई, आज मुझे स्कॉर्पियन बाइट हो गया, मेरा हाथ आज जल गया, मेरा छिल गया, आज बुखार हो गया। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई डेवलप माई नॉलेज how to take the modalities only, how to take the how to develop your observation, clinical observation. The first of all you have to diagnose the case and then you have to find out what is the causative factor and just try to go for a remedy, जिसको हम बोलते हैं ना जीपी, homeopathic GP. Then I started that. So basically क्या होता है ना, you have to give results without investigations, without asking so much history, without knowing their mental level. This was the basic difficulty for me, and from that moment I started reading clinical matter medicals like Dr. Pathak, Dr. Borik, इन लोगों का books I started reading. But nowadays homeopathy grows a lot. मैं प्रैक्टिस शुरू किया था 2006-2007 में, तो उस टाइम पे होम्योपैथी क्या होता है किसी को पता भी नहीं था। एंड नाउ इन एवरी हर गली में होम्योपैथ है। Now people are aware about it. It's a very good thing. It's our era, I can say to you. It's our era now. People are aware. Everybody knows what is homeopathy. And there were so much difficulties while practicing in village level. People are not ready to go for investigation also. And you have to diagnose the case without investigation. चाहे मलेरिया है, ये डेंगू है, whatever क्या है, आपको you have to give medicine and result देना है। That was the toughest job for me, toughest difficulties for me, जिसको बोलते हैं ना, बहुत बड़ा मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, पहाड़ था सामने मेरे। And that's it. Yes. Am I audible? Okay. I hope so. Yes, yes. Yeah. Okay. Yeah. So my next question is, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हम लोग, जैसे मेडिकल कॉलेज में देखते हैं बच्चे पास आउट होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब मेट्रोपॉलिटन सिटी से ही हो, है ना, बॉम्बे पुणे से ही हो। बहुत Yes. सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्मॉल विलेजेस से आते हैं और बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और उनका एक एम भी रहता है कि वो वापस अपने गांव जाके प्रैक्टिस शुरू करें। हाँ जी। क्योंकि आपने विलेज में प्रैक्टिस किया है, सो ऑडियंस ये जानना चाहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पेशेंट है उस जगह के, वो रूरल एरिया के, वो होम्योपैथ से एक स्मॉल टाउन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ओ, पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती मैं आपको बहुत सरल ही जवाब में बताना चाहता हूँ। देखो, विलेज लेवल पे डॉक्टर माने सब कुछ, आपकी डिग्री क्या है, आपने क्या फेलोशिप किया है, क्या एमडी किया है, उनके लिए कुछ पता नहीं होता है। हकीम माने हकीम, बस हकीम माने मेरी जान बचाएगा, दैट्स इट, ये होता है। सो कहने का मतलब क्या आता है कि सपने, अगर जो आपने मुझे सवाल पूछा ना कि उनके लिए आप सब कुछ हो, उनके लिए आप भगवान हो, वो आपके पास में बस ये जल गया तो आपके पास में लेके आएंगे, ये इनको कट गया तो आपके पास में लेके आएंगे। उनको ये नहीं पता कि ये डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल्स नहीं है, ये डॉक्टर के पास में कुछ काइंड ऑफ ड्रेसिंग का सामान नहीं है, ये डॉक्टर के पास में स्टिचेस का सामान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। सो इनिशियल स्टेज आई हैव ऑल दैट थिंग्स, आई वाज कीपिंग इन माई सेल्फ की स्टिचेस भी लगाना है हमको, जरूरत पड़ी तो हमको ड्रेसिंग भी करना है, ये सब करना होता था हमको। सो बट what I used to do, I was do the stitching, I was do the dressing, but I was giving a homeopathic medicine only. And now slowly they develop the faith on me, and now they are, मतलब ऐसा होता ना कि कुछ भी अगर आईसीयू केसेस है या फिर कुछ भी क्रिटिकल केस है या कुछ भी कन्वर्जेंस आ गए रात को, तो आपको बुलाना जाना पड़ता था रात को, डॉक्टर साहब को कन्वर्जेंस आ गए, इसको अस्थमेटिक अटैक आ गया, आ गए, इसको एमआई आ गया, आ गए।
So somehow you have to manage it with homeopathically. अगर आपको लगता है कि ये beyond that है, then you have to shift the patient towards allopathy. And ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ देता हूँ, मैं उनको साथ में जाता हूँ, वहाँ पे उनसे बात करता हूँ और मैनेज मतलब सेटल होने तक वहाँ रुकता हूँ. I also talk to doctors, I also talk to with them, and once they know that कि ये बंदे को कुछ नॉलेज है आईसीयू का, ये बंदे को कुछ नॉलेज है एलोपैथी नॉलेज का, then they respect you also कि ठीक है इसको आने दो अंदर, इसको ऐसा नहीं कि बाहर छोड़ दो इसको. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. मतलब मैं तो यहाँ पे सीख देना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है ना कि कोई भी मेडिसिन प्रैक्टिस में या फिर कोई भी फैकल्टी में दरार नहीं होती है. दरार होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. इफ यू हैव अ नॉलेज दे विल आल्सो रिस्पेक्ट यू. इफ यू हैव अ नॉलेज दे विल आल्सो एक्सेप्ट यू. ऐसा नहीं होता है कि वो आपको धिक्कार देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. देयर आर सो मेनी एमडी एमबीबीएस डॉक्टर, दे आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी एंड वी रिस्पेक्ट देम, you know, even though our father Dr. Haniman is MBBS MD, you know. तो ऐसा नहीं है कि हमको वो भी नॉलेज लेना नहीं है. एंड विलेज लेवल पे क्या होता है ना कि पेशेंट्स आपको भगवान समझते हैं और आपको हर चीज करना ही जरूरी है. अगर आप इमरजेंसी में अगर आप उनको रेफर करोगे ना तो आपका ऊपर का उनका विश्वास उठ जाएगा, यू नो. तो ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड यूर सेकंड एपोरिज्म and first embolism, and you have to do it at anyhow. That's it. But you must need to understand the prognosis. You must need to understand